can share it on the group. So thank you everyone for joining. It'll be nice if you can keep your video on so that we can all get each other's darshan. अच्छा रहेगा अगर वीडियो चालू रख सकते हैं तो. नहीं कर सकते तो I'll not force. But if it is Prabhuji, my possible, phone video is not working. चलो कोई बात नहीं. What about others? Others if they can, good. Otherwise, no problem. I'm not going to force anyone. Okay. Hare Krishna. So today's topic that we have selected, okay, is how to deal with disappointment in bhakti. Okay, how to deal with disappointment in bhakti. I'm just going to mute everyone. एक second. कोई तो बात कर रहा है. Hare Krishna. Okay. So how to deal with disappointment in bhakti. Okay, so we'll talk about this topic. How I came across this topic was actually I was reading something. There is this book called Narad Bhakti Sutra, written by Narad Muni. And Srila Prabhupada has written purports for the first 12 of those uh, of those sutras. They're like sutras. They're like Vedanta Sutra, very short statements about bhakti by Narad Muni. And Srila Prabhupada has written 12 of the purports. Rest have been written by Satsvarup Das Goswami Maharaj. So उसमें पढ़ रहा था, so I came across this one particular statement. I'll tell you what that is little later. But very nice statement, and that got me thinking that disappointment is a very real thing when we are in bhakti. We can get disappointed. But and in the purport in that verse, in that particular fifth, it's the fifth verse of that Narad Bhakti Sutra. I'll just read the verse for your reference. Yad prapya na kinchid, yad prapya na kinchid, vanchati na sochati, na dveshti na ramate, notsahi bhavati. So this is from Narad Bhakti Sutra number 5. Translation says a person engaged in such pure devotional service, neither desires anything for sense gratification, nor laments for any loss, nor hates anything, nor enjoys anything on his or her personal account, nor becomes very enthusiastic in material activity. So this is the translation. And in the purport, Srila Prabhupada actually refers to the nectar of instruction. Says, there are 6 things that we should avoid and 6 things that we should take up. So he refers to that. And in that connection, Srila Prabhupada says, he speaks about utsahat, the 6 positives. Utsahat, nishchayat, dhairyat, tat karma pravartanat, sangatyagat, sato vritti, shadbir, what is that? Priti Lakshanam. So anyway, so these are the 6, no, not Priti Lakshanam. Shadbir, Bhakti, Pravishyati. Okay, sorry. So sorry for my very poor memory. But this is the verse where he speaks about 6 things that are favorable to devotional service. And he speaks about enthusiasm. See, he has already said in the negatives that atyahara prayasascha. We should not be doing too much prayas. Too much of enthusiasm for material achievements should not be there, especially if you are a devotee. That is a topic for another day. I'll not get into that. But Prabhupada mentions that if one should not be enthusiastic for material achievements, at least one should be very enthusiastic for attaining the perfectional stage of devotional service. That means, for while materially one may not be very enthusiastic, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये promotion चाहिए, मुझे इतना bank balance चाहिए, मुझे इतना gold gold जमा करना है because gold price has gone up, whatever. We may have so many, so Prabhupada says a devotee should not be very enthusiastic for these material things. But he says that if you take away something, you tell someone to not do something, you have to fill the void. How do you fill it? By enthusiasm for devotional service. So he says you should have that, everyone should have that enthusiasm to attain the perfectional stage of devotional service. Not that, I just keep floating in the water. वो भक्ति का एक river है, वो बह रहा है, वैसे बह रहा है, और हम उसी रिवर में हैं.
ठीक है, वो रिवर चल रहा है, वो हम भी उसी रिवर के साथ फ्लोट कर रहे, नहीं. One should be very enthusiastic to attain the perfectional stage. Even if we are in a very fallen state, don't remain in a fallen state. Make the effort to raise your consciousness. Make the effort to become sincere. Make the effort to overcome your shortcomings and become better in bhakti. Do more bhakti, do better sadhana, do more seva. That is what Srila Prabhupada is saying. So, Prabhupada says a living entity cannot stop acting. Because that is the nature of the soul. Soul is very active. So, living entity cannot stop acting. But when he is forbidden to become enthusiastic about material achievements, immediately he should be encouraged to be enthusiastic about spiritual. He's saying enthusiasm is a symptom of the living entity. It cannot be stopped. Enthusiasm रहेगा. तो अगर हमने उसको बोले तुम ये मटेरियलिस्टिक मत करो, तो फिर मैं क्या करूं? मेरे को करना है कुछ. Not everyone is like that. Some people are just by nature very lazy. But if we have that enthusiasm to do something, Prabhupada says it cannot be stopped. That enthusiasm cannot be stopped. So if we don't engage them in process of bhakti, then they will use that enthusiasm for doing something materialistic. So he says it's like a powerful engine. This enthusiasm is like a powerful engine. If you utilize it properly, it will give immense production. These are Prabhupada's words. This is what he says in that purport. Therefore, he says enthusiasm should not be curbed. We should not try to enthusiasm. किसी का उत्साह है, उसको हमको रोकना नहीं है. उसको हमें purify करना है. We have to apply. We have to direct it towards bhakti. So Prabhupada says instead of employing enthusiasm for attaining material goals, one should be enthusiastic about achieving perfection in bhakti. And Prabhupada ends that section by saying that actually Krishna comes to this material world mainly to enthuse his devotees in devotional service. Otherwise, really everything is there. Shastra mein to sab kuch diya gaya hai. Why should Krishna come? What is the need for him to come personally as Brajendra Nandan Krishna? Why does he have to come as Sachinandan Shri Chaitanya Mahaprabhu? Why does he need to come personally? He comes to enthuse his devotees. He comes to, encourage them. कि भाई भक्ति करना इतना आसान नहीं. If you see even the Chaitanya Charitamrita or Chaitanya Bhagavad, if you read the stories, you understand even at that time, even when the Lord is present, so many challenges were. Haridas Thakur, Namacharya, but he was being kicked and beaten through 22 marketplaces. So, I mean, ऐसा नहीं है कि भगवान है सामने, समक्ष खड़े हैं तो सब कुछ एकदम स्मूथ होएगा, नहीं. There is still difficulty, but the Lord, just by seeing the Lord, by getting his darshan, by serving him, immediately everyone is very enthused. So the Lord comes to enthuse. Now, while we are executing bhakti with enthusiasm, what can happen? One can get disappointed in their service to the Supreme Lord, right? And that is what is our topic, that, disappointment, निराश, हताश होना भक्ति में. जब हम लोग भक्ति कर रहे हैं, we're trying sincerely, भाई कोशिश कर रहे हैं sincerely, फिर भी ऐसा क्यों हो गया? Why did this happen to me? Why did my so and so do like this? So, I mean, disappointment can come from any quarters. So, for a moment, I'm going to just open this up and I'm going to ask you only. आप लोग को ही मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो disappointment है, ये जो अपने मन में जो एक हताश, निराश, हताश जो feeling आता है, okay, everyone's able to hear, na? Okay, हाँ. So this disappointment that it comes, I want you to share why are we disappointed? क्यों हम लोग disappoint होते हैं? And what all can we be disappointed about? मतलब क्या क्या चीज के बारे में हम लोग disappoint हो सकते हैं? क्यों disappoint होते हैं? और किस किस चीज के बारे में disappoint होते हैं? I'm opening it up. Please share. Yes, लेखा माता जी और शुभम प्रभु बोलो. तो जी, Why are we disappointed? हाँ. मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों को बहुत हाई एस्टिमेशन होता है अपने आप से, और फिर जब पता चलता है कि एक्चुअली हमारा कैपेसिटी उतना नहीं है और हमने We थोड़ा have, बहुत एक्स्ट्रा रखे होते हैं अपने लिए, तो बहुत yes, हताशा होती है. yes, yes, और yes. We have प्रैक्टिकल very, गोल्स नहीं रखते तो
We have very high expectations from ourselves and we think कि अरे मैं तो प्योर डिवोटी से बस एक कदम पीछे हूँ, बस करूंगा तो सब बराबर हो जाएगा, एंड देन बराबर नहीं होता. Devotees come and they crush us sometimes कि what is this, ये क्या है, ऐसा करते क्या सेवा, and it is very very disappointing for us. Okay, what else? Why else do we get disappointed? Premari Prabhu, बहुत हंस रहे हो, बोलो. Why do we get disappointed? What all do we get disappointed about? No, no, Prabhuji. So I was just thinking about Lekha Mataji's comment. In our enthusiasm, we don't know how to balance our enthusiasm and our patience, right? So when we want to when we should be patient, then our enthusiasm comes out. And when we need to be enthusiastic, sometimes we become very patient, very morose. So yes, the application is very important between patience and enthusiasm. Very nice point. Actually, this is Yeah, I think another topic for and discussion. yeah. So and yes, as Lekha Magdaji has told that हमारे साथ हमेशा उल्टा हो रहा है. मतलब हम जैसे जैसे भक्ति के अंदर आगे जा रहे हैं, हमारा एक्सपेक्टेशन बढ़ता ही जा रहा है. मतलब हमारा एक्सपेक्टेशन भगवान से बढ़ता जा रहा है, भक्तों से बढ़ता जा रहा है. हमारा एक्सपेक्टेशन टेम्पल का एडमिनिस्ट्रेशन से बढ़ता है. तो मतलब जैसे जैसे हम भक्ति के अंदर प्रोग्रेस कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारे मेरे को लगता है कि स्पेशली फॉर मी, कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ता जा रहा है. इंस्टेड ऑफ उल्टा होना चाहिए कि हम जैसे जैसे भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हैं हमारा एक्सपेक्टेशन कम होना चाहिए, लेकिन हमारा एक्सपेक्टेशन बढ़ता जा रहा है. वाओ, अनदर ब्यूटीफुल पॉइंट. आप मेरे को ऐसा नेक्स्ट फ्यू डिस्कशंस के लिए अच्छे टॉपिक्स दे रहे हो. नाइस पॉइंट दैट when we are making progress in bhakti or spending more time in bhakti, actually हमारे expectations कम होने चाहिए. We should be having lesser and lesser expectations from Krishna. Because if you see any of the pure devotees, Krishna is begging of them, please, please take something from me. Please, have some expectation from me. I have expectation. I want to give you something. But they say, no, no, we don't want anything. Kuch bhi nahi. Why? Because A, they feel this is business. That, I don't do any business with you. And B, they feel, your mercy, sorry, sir, I don't deserve it. मेरा कोई औकात नहीं है आपका mercy लेने का. So they genuinely feel so fallen that I cannot take this. So therefore, yeah, it's a very nice point. I like this point. That when we are in bhakti, we should be actually, expectation should be going down, but the reverse happens. Okay, any other thoughts? Why do we get disappointed? Anyone else like to share? बोलो बोलो. अजय माधव प्रभु बोलो. क्यों होते हैं हम लोग डिसअपॉइंट? क्या है ऐसा हमारी भक्ति में कि हम लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं? डिसअपॉइंटमेंट के तो सो मेनी सोर्सेस आर देयर. तो फॉर एग्जांपल, like we like to be consistent in our sadhana. Say we, for example, we say कि we will get up at 4 o'clock every day and then we will finish our chanting say at 7 o'clock. So बट तो क्या था, 2-4 दिन करने के बाद फिर अगेन कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर हो नहीं पाता. विकेट तो हम गिर जाता है. डिसिप्लिन जो है फिर और शुरू करते हैं, फिर और करते रहते हैं. तो एक जो कंसिस्टेंसी है वो नहीं हो पाती Just one है. और second, just one second, जो one second. I was trying to change my speaker. तो कुछ गड़बड़ हो गया. एक सेकंड होल्ड करो. हाँ, अभी बोलो. से नाउ से समथिंग. ये प्रभु जी, नहीं हरे नहीं, कृष्णा. एक सेकंड, एक सेकंड. चेंज नहीं करना चाहिए था. Disconnect. Connection successful. One second, हरे प्रभु. हरे कृष्णा. ये क्या? Now the sound is working. Sorry. You were saying, Prabhuji, you were saying that expectations रहता है. एक
you know that we should be consistent in our sadhana, and वो नहीं होता तो हम लोग हाँ, बट एक फाइनल जो जो बड़ा रीजन है प्रभु जी, जो रियल डिसअपॉइंटमेंट होता है और जो होना भी चाहिए, वो क्या है कि जो साधना भक्ति है, जो व्हाट वी आर परफॉर्मिंग साधना भक्ति शुड लीड टू भाव भक्ति। क्योंकि जो भक्ति रसामृत सिंधु में यही बताया गया है कि साधना भक्ति वो होती है विच लीड्स टू भाव भक्ति। एंड देन भाव रिजल्ट नहीं आ भक्ति रहा है, है, रिजल्ट नहीं आ रहा है वो। तो भाव भक्ति जो होती है, अब वो इतने हाँ साल बीतते जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि एंथुसियाज्म, जो जैसे आपने बोला कि आपने अभी बोला था कि वी शुड एस्पायर फॉर परफेक्शन इन भक्ति, तो वो परफेक्शन जो है वो भाव भक्ति प्रेम भक्ति ही है। तो वो जो भाव भक्ति, जब क्या होगा कि जब हम खुद से एक ऑटोमेटिक हमारे अंदर जो भाव प्रकट होगा, जो कि व्रज के जो निवासियों का जो भाव होता है, उसका फीलिंग होना कि हम ऐसे हो जाएं इस तरह से, तो वो एक भाव भक्ति की जो अवस्था है, वो कब तक आएगी? क्योंकि अब मरने के बाद हम सोचते हैं कि तो वो कि उतना सही नहीं है कि वो डेथ के बाद ही होगा। एक्चुअली वो पहले अगर रियलाइज हो तो दैट इज द ओनली थिंग। तो अगर वहां नहीं पहुंचे तो साधना भक्ति किए जा रहे हैं, तो उसका मतलब हम कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, अपराध हो रहे हैं। तो ये रियल जो डिसअपॉइंटमेंट है प्रभु जी, या कि अगर भाव पत्र नहीं पहुंचे और ऐसे ही अटके रह गए और मतलब इम्परफेक्ट कंडीशन में, तो ये सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है जो व्हाट आई थिंक। वेरी नाइस। So, so if you look at it, anyone else wants to share, or shall we move on? Just anyone else wants to share that what do we get disappointed about, and why do we get disappointed? Anyone else wants to share? Anirudh wants to share something. Yeah, anyone wants to share anything? हरे कृष्णा प्रभु बोलो। Hare Krishna. प्रभु जी क्या हाँ बोला हम बोला, लोग हरि बलराम प्रभु। हाँ लोग खुद से कम अपेक्षा करते हैं और दूसरों से ज्यादा अपेक्षा करते हैं। ये ऐसा ही होना चाहिए, इसने ऐसा ही करना चाहिए, उसने वैसे ही करना चाहिए। इस चक्कर में हम ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो जाते हैं। हाँ, जब हमारा expectations are high, when our expectations are high from someone else or even from ourselves, you know, then we get disappointed. Okay. ठीक है। सो इफ यू थिंक अबाउट इट ना, दैट हम लोग क्यों डिसअपॉइंट होते हैं, क्या क्या चीज के बारे में डिसअपॉइंट होते हैं, ये तीन चार बॉक्सेस में बैठता है। एक ये कि मुझे जो रिजल्ट चाहिए था वो नहीं मिला। I was expecting, I did some seva, I did some sadhana, I was expecting some result, I'll get purified, I will get some, कुछ भी मतलब कुछ तो एक्सपेक्ट किया होगा मैंने, वो मुझे नहीं मिला, तो आई गेट डिसअपॉइंटेड। या तो उसके टाइमिंग से डिसअपॉइंट होते हैं कि यार 15 साल हो गए, 30 साल हो गए भक्ति में, कहाँ है भक्ति, हम तो किए जा रहे, इतना समय निकल गया, कुछ आ ही नहीं रहे, आ रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन जैसा वो ऐसा वो पिक्चर में दिखाते ना, डेजर्ट में एक नल छोड़ा है, उसमें से टप टप ऐसा एक एक बूंद गिर रहा है, वो भी बहुत टाइम के बाद एक एक बूंद गिर रहा है। हाँ, तो हमारा ऐसा अनुभव है, तो हमको लगता है कि क्या है ये, भक्ति चलता है कि नहीं है, ये डिसअपॉइंटमेंट है पूरा, कहाँ होगा क्या होगा हमारा, राइट? सो वी फील दैट वे। Then sometimes we feel disappointed in ourselves that I didn't follow the process. जैसा what Prabhuji said, Ajay Madhav Prabhu said, that I feel that I am not consistent enough. मतलब भक्ति में हमको एक्चुअली गाइडलाइंस काफी क्लियर है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमको मालूम नहीं है, पता ही नहीं था यार, क्या बात कर रहे हो। We know very well what we are supposed to do. We are supposed to chant our rounds in the morning before Brahma Muhurta, during Brahma Muhurta, 1.5 hours before sunrise. तो सब मालूम है अपने को। Chant attentively. Do not be distracted while chanting. Do not commit offenses to the holy name. Do not commit offenses to Vaishnavas. सब मालूम है हम लोग को, बट हम लोग फिर भी कर नहीं पाते, या करते हैं लेकिन कंसिस्टेंटली नहीं करते। मतलब मे बी आउट ऑफ 10 times we are able to do 5 times, but remaining 5 times we are not consistent, we are not able to do properly, so we feel disappointed। क्या है यार, इतना टाइम के बाद भी मैं कंसिस्टेंट भी नहीं हो पाया, फॉरगेट अबाउट क्वालिटी, फॉरगेट अबाउट रिजल्ट, मैं कंसिस्टेंट भी नहीं हो पाया, तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। फिर अनदर थिंग दैट कैन हैपन इज वी कैन गेट डिसअपॉइंटेड कि मुझे सेवा करने ही नहीं दिया, मैं करना चाहता था, मैं करना चाहती थी, आई वांटेड टू डू दिस सर्विस, but these Vaishnavas did not allow me to do the service. So you get disappointed by that also. हाँ, कि मुझे ये सेवा करने नहीं मिला, मैं इससे बेहतर कर सकता था,
मैं इससे बेहतर कर सकती थी. सो आई फील डिसअपॉइंटेड. आई एम नॉट अलाउड ओनली टू डू द सर्विस. यू नो, आई कुड हैव डन दिस बेटर देन दिस प्रभु. बट फिर भी उनको ही सेवा मिलता है हर टाइम. ये फेवरेट है उनके, इनको मिलता है चांस हर टाइम. तो ऐसा हम लोग उससे डिसअपॉइंट होते हैं. कभी कभी हम लोग वी आर डिसअपॉइंट. सेवा दिया हमको, लेकिन तुम ऐसे करो, ऐसे मत करो. आप जैसे करते हो वैसे नहीं, आपको ऐसे करना है. ये क्या है, सेवा कर रहा हूं अच्छे से, व्हाई यू आर इंसिस्टिंग इट बी डन दिस वे ओनली. वी कैन गेट डिसअपॉइंटेड बाय दैट आल्सो, दैट यू नो आई डोंट वांट टू डू दिस वे. तो हम लोग है ना, माई वे और द हाईवे. मैं करूंगा, मेरी तरीके से करूंगा, मेरे टाइमलाइन से करूंगा, मेरे क्वालिटी से करूंगा. मतलब माई वे और हाईवे. अगर अच्छा नहीं लगा तो बोलो, फिर मैं सेवा ही नहीं करूंगा. This is not the attitude of a devotee. Devotee has to have the attitude that gratitude, attitude of gratitude. You know that I am just grateful. मेरी क्या औकात है, क्या मेरी लायकी है, what is my qualification that I can do this service? I have no qualification. Still, by grace of Prabhupada, by grace of devotees, I'm getting to do this service. To be so grateful, right? But we want to do service at our, मतलब मेरे तरीके से, मेरे टाइमलाइन से, सब भाई. तो अगर वो नहीं हुआ, उससे भी हम लोग डिसअपॉइंट हो सकते हैं. या फिर जब मैं सेवा कर रहा था या कर रही थी, मैं सिंसियरली कर रहा था, लेकिन किसी ने मेरे को डिसरिस्पेक्ट किया. आई वॉज डिसरिस्पेक्टेड व्हाइल आई वॉज डूइंग माई सेवा. आई डिडंट हैव एनी इंटेंशन, मैं तो सिंसियरली सेवा कर रहा था, लेकिन मेरा इन्होंने अनादर किया. दे डिसरिस्पेक्टेड. सो वी फील डिसअपॉइंटेड कि क्या प्रभु जी इतना सिंसियरली सेवा कर रहे हैं, फिर भी भक्त लोग ऐसे क्यों बिहेव करते हैं. व्हाई डू दे बिहेव लाइक दिस विद मी. I had no such intention. I was just doing my seva quietly, but they came and they chastised me. They disrespected me. सबके सामने मेरा कचरा कर डाला. Right? You can feel disappointed by that also. अच्छा, एक और level of disappointment that I did my seva. I did it on time. I did it consistently. I did it as per quality. Everything I did properly. मेरे को किसी ने chastise भी नहीं किया. मैंने बराबर से किया. साधना सेवा दोनों अच्छा हो गया. However, प्रेम हरि प्रभु gave better lecture than I gave. बस अंदर से एक डिसअपॉइंटमेंट आता है कि यार प्रेम हरि प्रभु मेरे से अच्छा लेक्चर कैसे देते हैं. सो आई बिकम एनवियस. आई बिकम डिसअपॉइंटेड दैट यार मैंने इतना मेहनत किया, बट देखो सारा प्रेस तो उसको चला गया. ही बिकेम द हीरो ऑफ द होल थिंग. ही डिड दिस. माताजी डिड बेटर कीर्तन देन आई डिड. दिस माताजी मेड बेटर गार्लैंड देन आई डिड. This Prabhuji cooked better prasad than I did. We can get disappointed by even that I did everything properly, but someone did better than me. Someone got better result than me. मतलब किसी को मेरे से ज्यादा मर्सी मिला. मतलब कैसे कि वो लेक्चर होने के बाद, प्रोग्राम होने के बाद, वो वहां पे जो गौरांग प्रभु आए थे ना, गौरांग प्रभु ने ये प्रभु को पकड़ के एम्ब्रेस किया कि प्रभु जी क्या आप सेवा किया, टू गुड. मैंने ज्यादा सेवा किया था, लेकिन मुझे नहीं मिला वो. आई डिडंट गेट दैट मर्सी. सो पॉइंट इज, इफ वी वांट टू गेट डिसअपॉइंटेड, और नॉट वी वांट टू, बट अगर हमारा वो माइंड सेट है कि हम लोग इजीली डिसअपॉइंट होते हैं ना, तो हम लोग इजीली डिसअपॉइंट होंगे. We'll be disappointed by anything and everything. We just discussed so many different scenarios, to get disappointed. So, this is the nature of the material world. We should understand one thing very clearly. Material world में जब तक रह रहे हैं हम लोग, अभी भी भक्ति, we are not become pure devotees. We are still struggling in the material world. So when we are in the material world, naturally it is possible that excuse me, naturally it is possible that while you are living in the material world, there will be setbacks and disappointments. ये तो नेचर है मटेरियल वर्ल्ड का. अगर आपका कर्मा ही नहीं है, अगर आपका कर्मा अच्छा नहीं है, तो आप ज्यादा इस लाइफ में सक्सेस और नाम प्रतिष्ठा एक्सपेक्ट मत करो. बिकॉज even if you do things nicely, if it is in your karma to be insulted because of your bad karma of the past, even though you do sincerely, you may still get it. वो थप्पड़ आपको फिर भी मिलेगा. It is like, वो कैसा होता है कि कोई एक व्यक्ति है, उसकी गाड़ी है, एकदम खटारा गाड़ी है, मतलब अभी जैसे मेरी गाड़ी हो गई है ऑलमोस्ट, बहुत पुरानी हो गई है. सो एकदम खटारा गाड़ी है, और वो गाड़ी का टायर का अलाइनमेंट नहीं है, टायर घिस गए हैं सब, मशीन उसका इंजन पूरा वोर्न आउट है. यू नो
एंड वो गाड़ी लेके आप अटल सेतु पे चल पड़े, अटल सेतु पे एकदम स्मूथ ऐसा सुपर हाईवे पे एकदम वो गाड़ी लेके, तो वो गाड़ी लेके जा रहे हो, हाईवे परफेक्ट है लेकिन आपकी गाड़ी हिल रही है ऐसे ऐसे, क्योंकि क्यों बाजू से गाड़ी सब 150 के स्पीड में जा रहे हैं, तो आपकी गाड़ी हिल रही है उसकी वजह से। सो इवनिंग क्या है यार, ये मतलब इतने अच्छे हाईवे पे आके भी हमारी गाड़ी हिल रही है। हाँ, अभी आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम है, हाईवे में प्रॉब्लम नहीं है। इट्स नॉट दैट द प्रोसेस ऑफ भक्ति इज एन इशू, इट्स योर कार, योर व्हीकल, योर बॉडी व्हिच इज अ प्रॉब्लम। इफ योर बॉडी इज अ प्रॉब्लम, यू अंडरस्टैंड दिस इज नेचर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। अगर मेरे भाग्य में लिखा है कि मेरे को बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स, बहुत सारे फेलियर्स फेस करने पड़ेंगे ये लाइफ में, देन दे विल कम। बट व्हाट इज आवर फिलोसफी? What is our philosophy of Bhagavad Gita? Our philosophy of Bhagavad Gita is very simple. Sukhe dukhe same kritva labha labho labha alabho jaya ajayo. So whether you are getting happiness, you are getting distress, you are getting disappointment, or you are getting great appointment, मतलब आपका एकदम बहुत अच्छा हो गया सब कुछ, you are getting great puja लाभ प्रतिष्ठा in bhakti, whichever your situation may be, same kritva, you have to just keep going. Don't think about results. Our whole philosophy is karmanyevadikaraste ma phaleshu kadachan, right? So we may have a certain set of skills according to our previous karma, our previous desires, and as per those skills we will do our seva, we will do our sadhana. अभी अगर हमारे डेस्टिनी में थोड़ा सफरिंग लिखा है, वो भक्ति के थ्रू भी मैनिफेस्ट हो सकता है। डोंट बी डिसअपॉइंट, डोंट बी सरप्राइज, अरे ये क्या हो रहा है यार, कर रहा हूँ सिंसियरली भक्ति, फिर भी ऐसा इतना लात खाना पड़ रहा है, इतने झापड़ मिल रहे हैं लाइफ में। हाँ, अगर आपका वो डेस्टिनी है तो आपको वो सफरिंग मिलने ही वाला है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उसको, लेकिन वो आ जाता है, आपको ढूंढ के वो सफरिंग आ जाता है। So if you see, if you look from Prabhupada's point of view, what does Prabhupada say? So Prabhupada says that disappointment in bhakti comes when we mix bhakti with material expectations. Bhakti को material expectations से mix मत करो. Pure bhakti is not based on personal success, on recognition, on comfort. I am very comfortable doing this सेवा, बाबा ये सेवा हमको बहुत अच्छा लगता है, नहीं, ये सब मटेरियल चीज है कि मेरा कंफर्ट जोन क्या है, मुझे टाइम कब मिलेगा, मेरा एंथू जब रहेगा तब मैं करूंगा, जब मुझे ये करने से सक्सेस मिलेगा तो ही मैं करूंगा, मुझे कोई रिकॉग्नाइज करना चाहिए, कोई आके मेरा पीठ थपथपाना चाहिए। भक्ति इज नॉट बेस्ड ऑन एनी ऑफ दीज थिंग्स। प्योर भक्ति इज बेस्ड ऑन ओनली सर्विस एंड सरेंडर टू द विल ऑफ कृष्णा, दैट्स इट। प्योर भक्ति is based on the service and surrender to Krishna's will. Therefore, if we look at it from the point of view of scripture, we look at it from point of view of Srila Prabhupada, how do we deal with this disappointment which is coming in our life? See, already we have discussed, we have understood that हमारा starting point ही गलत है, उसके लिए हम लोग को भक्ति में disappointment आ सकता है। So bhakti, first of all, we should understand. Prabhupada, I mean, we see in the Srimad Bhagavatam, it says, ahaituki apratihata, right? Bhakti is meant to be ahaituki. Ahaituki means what? Ahaituki means? What is ahaituki? Yes. Without any material motivation. Without any cause. Without any material motivation, without any for any cause, मतलब ये होगा तो मैं भक्ति करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। Bhakti, our process of bhakti is, I mean, all the stories in Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Ramayana, जहाँ जो स्क्रिप्चर उठाओ, जहाँ भक्ति का उल्लेख आता है, पहले तो इसको बाहर निकाल दो, मटेरियल एक्सपेक्टेशंस रखो ही मत, So bhakti is not meant for material results. It is not even meant for spiritual results. Bhakti is not even meant for spiritual results. That I will become pure devotee. अनर्थ निवृत्ति होगा मेरा, मुझे भाव, I will get bhava bhakti. I will get those ecstatic symptoms that we read about in Chaitanya Charitamrita. When Narottam Das Thakur entered the Padma river and the love that Lord Chaitanya had deposited, when it touched his body, he went into ecstasy.
वो नहीं होगा और उसका उम्मीद भी नहीं रखना चाहिए। अगर होगा तो होगा। See, जब होगा, अगर होगा, भगवान की इच्छा है, गुरु की इच्छा है, प्रभुपाद जी की कृपा है, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन, बट वी शुड नॉट एक्सपेक्ट इट, वी शुड नॉट वेट फॉर इट कि चलो अभी नहीं आया, ये साल भी नहीं आया, ये डेकेड में भी नहीं आया, अगले डेकेड में, मेरा सेकंड डेकेड ऑफ भक्ति चालू हो रहा है अभी थोड़े टाइम में, तब तब आएगा ये भक्ति का। कहीं तो मैंने पढ़ा है कि आफ्टर 40 years प्रभुपाद परफेक्टेड हिज चैंटिंग। मेरा अभी 30 साल हो रहा है, एक साल में 30 साल कंप्लीट हो रहा है, बस 10 ही साल रुकना है, फिर उसके बाद प्योर भक्ति। कोई मैथमेटिक्स नहीं है कोई मैथमेटिक्स नहीं है, कोई मटेरियल, वी कैनॉट अप्लाई ऑल दीज मटेरियल स्टैंडर्ड्स टू भक्ति। इट इज नॉट मेंट फॉर एनी स्पिरिचुअल और मटेरियल रिजल्ट्स। It must be without material motive. And if we expect a certain outcome from our sadhana or from our seva, whatever sadhana we're doing, reading Prabhupada's books, I'm reading so that I become scholar. I'm serving so that people give me position, give me recognition. They at least acknowledge that I am there in this movement. I am preaching so that people become devotee. I am chanting Hare Krishna so that pure love for Krishna manifests in my heart. अहेतुकी डिफिकल्ट है, बट ये एक्सपेक्टेशन जब तक रखेंगे कि मुझे पोजीशन चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, मेरे जो जीवन में क्लेश है उससे मेरे को राहत मिलेगी, as long as we have any expectations, material or spiritual, disappointment will naturally come. Because as I said, if it is not in our karma, we will not get it. We don't deserve it, we won't get it. तो आप डिजायर करते रहो, एक्सपेक्ट करते रहो, लेकिन वो मिलेगा ही नहीं, और फिर आप खाली डिसअपॉइंट हो रहे हो, जस्ट गेटिंग वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड. So Prabhupada said, and I said I'll tell you this later, what Prabhupada said. Very nice point Prabhupada makes. He says, if at all disappointment comes in our life, he says, I'm quoting, that disappointment must be rejected and replaced with confidence. That utsahat, that dhairyat, it should be replaced with confidence in attaining the ultimate love of God. So, do not हम लोग भक्ति में जो हम लोग प्रोसेस फॉलो करते हैं, हमें प्राइवेटली वी नो, पब्लिकली एवरीवन में थिंक, ओ सच ए प्योर डिवोटी, कितना सेवा करता है, कितना ये व्यक्ति का साधना अच्छा है, ही सो हम्बल, माता जी सच मतलब देवी है एकदम, कितना प्योर है ये. तो बाहर से हमको रिकग्निशन मिल रहा होगा, लेकिन प्राइवेटली हम जानते हैं कि हम कितने पतित हैं, how fallen we are accepting this. We should be ashamed that, my God, Prabhu, you don't know what my real charitra is like. Please don't praise me. We can't even say that. तो हम लोग चुपचाप मनी मन ऐसा, ठीक है अभी बोल रहे हैं हरे कृष्णा बोलेंगे, but in our heart of hearts we know how impure we are, how many mistakes we are making. But however fallen we are, however disappointed we may be with our own sadhana, with our own progress, with the lack of reciprocation we're getting from Krishna, from Guru, from Vaishnavas, however disappointed we may be, we should not lose faith in the process, that if we follow this process, ultimately we will get the ultimate goal, which is love of Krishna. It is sure. It is not that हो सकता है, बहुत जनों का हुआ है, आपका भी हो सकता है, ऐसा नहीं है. It is sure, guaranteed. Whether it will happen in this lifetime, next lifetime, next 15 minutes, वो हमको नहीं मालूम. We don't know. But we have to have faith in the words of our acharyas who have personally followed the process, who have experienced what love of Godhead means, and therefore they have given their realizations, their learnings, their experiences, their wisdom, their knowledge. They have shared it in the scriptures, so that 500 साल बाद या इवन 5000 साल बाद, 10,000 साल बाद भी कोई एक पुस्तक उठाएगा,
नारद भक्ति सूत्र उठाएगा, प्रभुपाद का परपट पड़ेगा और बोलेगा कि डोंट बी डिसअपॉइंटेड, इफ यू फील डिसअपॉइंटेड just reject it and replace it with confidence in attaining the ultimate goal, which is love of Krishna. So it will come. If Prabhupada is saying, the Acharya is saying, Narad Muni is saying, what reason do we have to disbelieve them? You have to just know that I am sure I am not following the process properly. मुझे खुद पता है कि मैं अच्छे से नहीं कर रहा हूँ. मैं एक मतलब एज आई सेड फ्लोटिंग, रिवर है, वो रिवर के भक्ति के रिवर में बोट में हम लोग चढ़ चुके हैं. वी हैव टेकन दैट एनालॉजी टू सीरियसली. जो बोलते हैं ना कि यू गेट ऑन टू द बोट वेयर प्रभुपाद इज द कैप्टन ऑफ द बोट, जस्ट स्टे ऑन द बोट एंड द बोट विल टेक यू बैक टू गॉड. और राधा गोपीनाथ प्रभु जो एग्जांपल देते हैं कि लिफ्ट में चढ़े ग्राउंड फ्लोर पे, बस लिफ्ट में पड़े रहो, बटन के साथ छेड़खानी मत करो, बस लिफ्ट में रहो, थोड़े जन अंदर आएंगे, थोड़े जन निकल जाएंगे, आप लिफ्ट से उतरना नहीं, अल्टीमेटली आप 50th फ्लोर प्योर गॉडेड तक पहुंच जाओगे. हम लोग ये एनालॉजी को बहुत ज्यादा सीरियसली लेते हैं कि मुझे तो सिर्फ लिफ्ट में रहना है, कुछ करना तो है नहीं. दैट इज एन एनालॉजी फॉर टू अंडरस्टैंड दैट डोंट कीप going in and going out, being attracted by other, things, other destinations on the yoga ladder. Don't be attracted by that. Just stay on the path of bhakti, and bhakti will take you. But we have to perform, that bhakti. करना है, अच्छे से करेंगे तो रिजल्ट तो आना है. That's what Prabhupada is saying. Have confidence. Even if you feel disappointed, हटाओ उसको बाजू में. I'm feeling disappointed right now. That's okay. I am the servant of the Lord and the servant of the Vaishnavas. Let me just serve them. Let me just follow instructions of my Guru. Another way to deal with disappointment is accept that Krishna's plan is perfect. Just accept it. See, Krishna tells us in the Gita, Sarva dharman parityajya mam ekam sharanam vraja. Aham tvam sarva papebhyo mokshayisham ma sucha. Don't be afraid. Don't be afraid. Don't be disappointed. Don't be anything. Just surrender. If we accept that Krishna's plan is perfect, if we are trying, we are not surrendered. At least I don't speak on behalf of all of you. Some of you are surrendered. I know I am not surrendered. मैं तो अभी बहुत मीलो दूर, अभी दिल्ली बहुत दूर है मेरे लिए. हाँ, तो सरेंडर हम लोग पहुंचे नहीं हैं, बट उस रास्ते पे चल पड़े हैं. वी हैव जस्ट टेकन फर्स्ट फ्यू स्टेप्स इन दैट डायरेक्शन कि चलो सरेंडर करते हैं यार, कोशिश करते हैं सरेंडर करने का. सो व्हेन आई एम ट्राइंग टू सरेंडर, व्हाट हैपेंस? So many setbacks may happen. Things may not work out the way we are planning, but we have to have faith that Krishna's plan is perfect. He knows what is good for me. He knows. You may not know. You may be confused. कि अरे यार मैं अभी इतना सब ये किया, कुछ निकला नहीं इसमें से, अभी मैं कुछ और ट्राई करूं क्या, मैं कुछ और करूं क्या, shall I experiment with other philosophies, shall I experiment with other things? You may get confused, but the Lord knows what is right for us. We have to just accept his plan. Disappointment often means, what disappointment came in your life? You were trying something. आप भक्ति कर रहे थे, साधना कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, सब कुछ अच्छे से कर, सदाचार भी कर रहे थे. You were doing everything nicely. But still some disappointment came in your life in all the forms that we discussed. It often means that Krishna is correcting us. He is purifying us, or he is just protecting us. Maybe we are becoming too proud. Maybe we are thinking that bhakti is like a linear equation, y is equal to 3x plus 7y, 7h. ऐसा एक इक्वेशन बना लिया हमने भक्ति का. 16 माला करो, इतना लेक्चर सुनो, इतना डीटी वर्शिप करो, तो हो गया हमारा भक्ति, हम लोग डायरेक्ट प्योर डिवोटी बनेंगे. बट भक्ति इज नॉट सो लीनियर. Bhakti is not a linear equation, So we have to understand that Krishna's plan is different. हमने ये बहुत बार सुना है ना. One minute, I'm just writing this down. I'll forget otherwise. Sometimes we say na that when we go with our plans in front of Krishna, Krishna is having a good laugh. हंस रहे हो कि अच्छा बेटा ये सोच रहे करने का, करो करो, very nice. He is laughing because he knows that तुमको ये नहीं मिलने वाला है. He knows. You're not ready for it. Sometimes the recognition that we get in bhakti, we're not ready for it. And we become proud. We become puffed up. So
You know, sometimes Krishna doesn't give it to us for our own protection, for our own purification, for our own correction. So accept that जो मेरे लाइफ में disappointment आ रहा है, पूरे कोशिशों के बावजूद, they are coming because this is part of Krishna's plan. This is another way to deal with disappointment. Then we understand from scriptural perspective, disappointment in life is Krishna's special mercy. Tattenukampa susumiksamano, that verse, Munjana eva katam Sattenukampa susumiksamano, Munjana eva. कृतम विपाक. So I am forgetting. So anyway, so the verse tells us that the devotee who accepts difficulties, and he sees it as Lord's mercy. You know, such a person receives his rightfully he is, you know, recipient of Lord's mercy, because he accepts suffering as a very small reaction to past karma. ये जो disappointment आ रहा है मेरे को, ये मेरे ही गलतियों की वजह से, या तो मेरे साधना में त्रुटि थी, या तो मेरे पिछले मेरे कर्म खराब थे, इसीलिए मेरे को आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू नो अदर्स आर गेटिंग, आई एम नॉट गेटिंग, मुझे लात मिल रहे हैं. ओके, माय लॉर्ड, यू वांट टू किक मी, आई एक्सेप्ट इट. बट ही और शी does not give up bhakti, continues bhakti at any cost. Bhakti should not be given up. So sometimes accepting difficulty as the special mercy of Krishna is a very nice way to deal with it. ठीक है, मैंने कोशिश किया, भगवान ने नहीं दिया, कोई बात नहीं, I will continue. That is our philosophy. Chaitanya Mahaprabhu says, Ashlishava padarataam pinashtumam adarshana marmahatam karotuva yatha tatha va vidadatu lampato mat prananathastu sa eva naparaha. Says that, my Lord, whether you love me, accept me, embrace me, kick me, ignore me, whatever you may do, you are my prannath and I am your servant. ये कभी चेंज नहीं होगा. कुछ भी आपको जो करना है करो, कितना भी मेरे को डिसअपॉइंट करना है करो, कितना भी मेरे को किक्स देना है दो, कितना भी मुझे फेलियर देना है दो, बट मैं आपके चरण नहीं छोड़ू. Very difficult. I am not saying this is easy. This is very, very difficult to come to this platform where, despite any setbacks in life, we're able to accept this is Krishna purifying me. This is the Lord purifying me. Life is not going the way I want it to, but this is Lord's will. Accept it. ठीक है, लात खा रहा हूं, एक्सेप्ट कर लो उसको. डिफिकल्ट है, but that is what Lord wants from us. That is what Prabhupada wants from us. Our surrender should not be dependent on everything going well. सब बढ़िया जा रहा है भाई, तो अभी सरेंडर करेंगे, ऐसा नहीं होता है. लाइफ में चैलेंजेस आएंगी. Sometimes this disappointment or becoming discouraged. Disappointment is one thing, कि मुझे बुरा लग गया, क्या यार, इतना सिंसियरली मैंने ये किया, सेवा किया, साधना किया, कुछ मिला नहीं यार. शी, I wish I could have got something out of this. That is disappointment, which is bad, but they are talking how to deal with it. But worse than that, one step forward, is discouraged. We get discouraged. Maybe this path is not meant for me. I'm not saying bhakti is bad. अभी देखो, इतने साल भक्ति में रहने के बाद सब शास्त्र पढ़े, बहुत सारे आप लोग में से भक्ति शास्त्री किए, कोई भक्ति वैभव किए, कोई भक्ति वेदांत भी बनेगा, पता नहीं, राइट? You know, the philosophy is so perfect that we cannot find fault in it. Very difficult to find fault. But इनमें से कि मेरी नहीं है औकात, I am too offensive a person, I am too attached to sense gratification. मेरे प्रीवियस कंडीशनिंग ऑफ लास्ट, एंगर, ग्रीड, ये गए नहीं है, इतने साल बाद भी नहीं गए, और ये जाने वाले भी नहीं है लग रहा है. जाने दो यार, ये भक्ति वक्ति छोड़ दो, ये प्रैक्टिकल नहीं है. कलयुग में सब लोग के लिए नहीं है ये भक्ति. रिमेम्बर, प्रभुपाद ने बोला था, डायमंड के दुकान में बहुत कम कस्टमर है, शायद मैं उन कस्टमर में से नहीं हूं. So these are all tricks of Maya. Maya will trick you to stop bhakti, to reduce intensity of bhakti. थोड़ा वॉल्यूम कम करो भक्ति का, थोड़ा एक कंफर्टेबल लेवल लेके आओ उसको. यू नो, वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो रहा है भक्ति का, बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है बहुत भक्ति का, तो आवाज कम करो, एकदम कंफर्टेबल का. हाँ, अभी एकदम सूदिंग लग रहा है भक्ति, हल्का फुल्का साधना,
हल्का फुल्का सत्संग, हल्का फुल्का शास्त्रों का एक्सपोजर. दिस इज वेरी कंफर्टेबली एकदम स्टेडी स्टेट में जा रहा है, मस्त. सो दिस इज माया's trick. Maya is tricking you to stop or to reduce intensity of your sadhana, intensity of your seva. If this happens, if you have gone from disappointment to discouragement, then Prabhupada says, immediately approach devotees. Approach some senior devotee, share your heart, say, this is what is happening, what should I do? Senior devotee will tell you, don't worry Prabhu, I also went through the same thing. मेरे साथ भी यही हुआ है, बस टिके रहो. Just continue in the process of bhakti, everything will become okay again. Okay. Then remember the examples of great souls. Whenever we feel disappointed कि देखो यार मैंने इतना सब किया, देखो मेरे लाइफ में कितने लात पड़े. Why is Krishna doing this to me? Why is he so unkind? Why is he ignoring my effort? I'm making effort. मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ. I'm trying my best, but still Krishna is not reciprocating. Those whom I'm preaching to are not reciprocating. My family members are not reciprocating. You may feel disappointment कि मैं इतना सब कर रहा हूँ फिर भी मेरे को नहीं आ रहा है. But we see the examples of great devotees like Prahlad. What is he doing? You're just following bhakti chup chap. But Father जबरदस्ती उनको इतना suffering दिया. We see Pandavas. Pandavas were just wonderful souls, but throughout their life they were troubled. Bharat Maharaj, the brother of Lord Ram, he had nothing but pure bhakti towards Lord Ram in his heart, but he got only disappointment. He only got accusations. People just accused him कि तू मतलब तेरा कोई तो vested interest था, जरूर तूने ये षड्यंत्र अपने माँ के साथ रचा है. Right? He didn't deserve it at all, but still he got it. This is the nature of the world. So we learn from these devotees that even though they had such horrible, unfavorable situation where even life was at risk, even then they never felt disappointed in Krishna. क्या कृष्णा, हम तो सिंसियरली चुपचाप अपना धर्म किए जा रहे हैं, अपना कर्म किए जा रहे हैं, आप तो बस हमें लातों पे लात चढ़ा रहे हो एक के पीछे एक. They never felt disappointed in Krishna. They never gave up the process of bhakti. They never gave even faith in Krishna. In fact, Kunti Maharani is saying that, my Lord, please give us more. और disappointment दो हमारे नसीब में, और ठोक ठोक के disappointment दो, कोई problem नहीं. Why? Because when this disappointment comes, when this adversity comes in our life, I see it as an opportunity to take shelter of you. This is the attitude that we should try to develop. That disappointment is coming in my life. All right, let me accept it. This is my karma. But my Lord, I will now take deeper shelter. I will chant better. I will wake up early. I will chant with Vaishnavas. I will come for satsang every Sunday. Every Sunday I will attend Sunday feast. I will never miss any classes. I will read Prabhupada's books. Go back to basics. Prabhupada says, the devotee should patiently follow the rules and regulations of devotional service, because bhakti itself cures disappointment. आप बोले भक्ति करके ही डिसअपॉइंटमेंट हो गया, आप बोले और भक्ति करो, हाँ और भक्ति करो. Because when we do devotional service with expectations, then what happens? We get disappointed. That's what we are expecting has not happened. That's why we're disappointed. But if we realize all these things that we have discussed, and we now again continue doing bhakti with or without expectation, but we just continue. It's like Prabhupada gives that analogy somewhere, that if you fall down on the ground, अगर आप जमीन पे गिर गए तो आप जमीन को कोस नहीं सकते, क्या तुम्हारी वजह से मैं गिर गया. आप उसी जमीन का शेल्टर लेके फिर से उठते हो. करेक्ट? In the same way, bhakti, if we have expectations in bhakti, sometimes we may get disappointed. But that doesn't mean we give up bhakti. We should continue bhakti with the same level of enthusiasm, and we should just again increase our, our intensity, our quantity of bhakti. Jitana बढ़ा सकते हैं करो, because bhakti only is the
cure for disappointment. So devotee should sincerely, patiently follow the rules and regulations of devotional service, so that the day will come, Prabhupada says, so the day will come when he will achieve all of a sudden all the perfection of devotional service. एक साथ सब कुछ आएगा, छप्पड़ फाड़ के आएगा, बट उसके लिए अपने को श्रद्धा रखनी है. We have to have that faith that the Lord will give you. You will not realize how it comes, but it comes. It does come. So, I forget about spiritual. I'll give you material example. Material example, when we're doing some profession. If you do that profession sincerely for 10 years, it is described 10,000 hours or 10 years, ऐसा कुछ तो है वो. अगर आपने वो sincerely 10 साल तक किया, 10,000 घंटे या 10 साल तक किया, you will become expert in it. After that 10,000 hours are over or that 10 years are over, आप वो करते जाओगे and you don't need to even put much effort. You will start getting the results. It will come just naturally. You may think that अरे ये क्या हो गया, मेरे को कुछ हुआ नहीं. आपका इतने साल जो आपने धीरे 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 जो मसाला भरा है, अब वो मसाला भर के एक अलग एंटिटी तैयार हो गया है. And at some point, the transformation happens. So till that point, like the Chataka bird, Prabhupada gives the example of Chataka bird. Radhanand Maharaj also gives example of Chataka bird. The Chataka bird is patiently waiting. उधर नीचे pond है, lake है, river है, fresh water है वहां पे. लेकिन Chataka bird doesn't drink water from there. It just looks at the sky and waits for the rain cloud to ultimately give that drop of water. जो बारिश का बूंद गिरता है, Chataka bird only drinks that. And while it is waiting, sometimes it is struck by thunderbolts, it is struck by lightning, so many things may happen. But the Chataka bird doesn't compromise. He continues to wait for that drop to fall. So we have to also be like that. Prabhupada is saying, just follow the process. Don't get, distracted, discouraged, disappointed. ये सब चीजों में अपना ज्यादा mental energy मत डालो. We should not lament for any loss or any reverse or any disappointment in our advancement of spiritual life. Prabhupada says, this patience, this dhairya is the third positive item for advancing in devotional service. So just to conclude, since we're almost out of time, disappointment comes from expectation, from subtle. It could be very gross expectation कि मेरा नाम अच्छा बनना चाहिए, मेरे को ISKCON में एक पोजीशन मिलना चाहिए, I should be in this position. Maybe gross expectation, maybe subtle expectation कि यार मेरे को at least people should acknowledge that I'm doing seva. Maybe subtle. But we have to understand that actually bhakti means that I am the servant of the servant of the servant of Krishna. Whatever Krishna does in my life, that is perfect. And Srila Prabhupada showed this personally in his own life. He faced so many illnesses, he faced so much opposition, he was betrayed by his own god brothers, sometimes by his own disciples. So many financial hardships, everything was there, all kinds of disappointments were there. Prabhupada's life is a full, मतलब आपको हर page of Leelamrit you will find disappointments only. ज़्यादा disappointment है उनके life. Towards the end he started getting success. But for good 72 years of his life, there was only disappointment. But he never stopped serving. He never stopped his sadhana. He never gave up faith in the words of his guru. We also should deal with disappointment in the same way. Thank you very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Srila Gurudev ki jai. Nitai Gaur Premanandi. Hari Hari Bol. Hare Krishna. So anyone would like to share any thoughts, any comments, questions? You can open up for comments, questions, anybody? Yes. Mohan Charan Prabhu. हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes, Mataji. कितनी Mataji? प्रभु जी, डिसअपॉइंटमेंट एक्सपेक्टेशन वगैरह आपने जो बोला, लेकिन कैसे होता है बाय द एज फैक्टर और आई डोंट नो, बुद्धि कम होते जाती है या रिसाइटेशन मीन्स एटलीस्ट मेरे बारे में तो बोलती हूँ, श्लोका पहले चाइल्डहुड में या कॉलेज में उधर श्लोका अच्छा से बोल पाती थी या स्टार्ट में भी बोल पाती थी, लेकिन अभी वो उतना होता नहीं है मेमोरी या वो हिसाब से भी कभी कभी डिफरेंट क्या करते हैं लेकिन होता ही नहीं है, पढ़ते हैं याद ही नहीं रहता है,
वो हिसाब से भी डिसअपॉइंटमेंट कभी कभी आ जाती है। You see, I faced that disappointment during this lecture twice. Famous verse तत्तेनु कंपा, उसमें अटक गया गाड़ी. So disappointment na Mataji, Krishna will purify you in so many ways. In front of everyone, you know, you are humiliated like this. You are trying to say a verse, common verse. कभी कभी ओम अज्ञानति में रंजन से बोलते हैं, उसमें एक वर्स छूट जाता है. होता है. Happens to the best of people. So if we are trying to impress people, na Mataji, by my shlokas, by my कितने अच्छे से बात करते, अगर हम किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं ना, तो ज्यादा फिर वो डिसअपॉइंटमेंट आता है. बिकॉज व्हेन यू आर ट्राइंग टू इम्प्रेस यू हैव सम एक्सपेक्टेशन एंड पीपल डोंट गेट इम्प्रेस्ड, यू फील वेरी डिसअपॉइंटेड. ये क्या है? अरे जस्ट टेक दिस कॉल. सो इफ यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम पीपल, यू नो, कि मैंने इतने अच्छे से श्लोका बोला, मैंने इतना अच्छा लेक्चर लिया, किसी ने बोला नहीं प्रभु जी आपका लेक्चर क्या बढ़िया था, किसी ने नहीं बोला. इफ यू आर एक्सपेक्टिंग दिस, you will be disappointed. So sometimes we may have certain limitations like shlok bolna, shlok yaad karna. Even I have that problem. I don't remember. So I few Gita verses, few one or two Bhagavatam verses I have memorized. उसके आगे मैं ट्राई भी नहीं करता बिकॉज मुझे पता है मेरा क्या लिमिटेशन. माई लिमिटेशन इज आई कैन नॉट मेमोराइज श्लोकास. So I don't even try. I try little bit. What is needed, that much I do. उससे ज्यादा मैं ट्राई नहीं करता बिकॉज मेरे को मालूम है कि नाउ आई एम गोइंग इनटू द जोन फ्रॉम इंस्पायर टू इम्प्रेस. आई एम ट्राइंग टू इम्प्रेस कि देखो प्रभु जी कितने अच्छे अच्छे वर्सेस बोलते हैं ना, क्या बात है. दैट्स नॉट आवर इंटेंशन. इफ यू आर एबल टू डू, वी डू. इफ यू आर नॉट एबल टू डू, आफ्टर all efforts you're not able to do, we accept this is the will of the Lord. We come across all kinds of devotees. There's one devotee who has struggled in chanting Krishna. नॉर्मल बाकी सब बात कर पाता है, लेकिन हरि नाम चैंट करते हैं, हरे कृष्णा, वो कृष्णा वर्ड नहीं निकलता है उसके मुंह से. राम बराबर होता है, हरे राम 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 हरे हरे, बट हरे कृष्णा सच अ बेसिक थिंग नॉट एबल टू डू. सो वी डोंट नो हाउ कृष्णा इज गोइंग टू प्यूरिफाई अस. कहाँ से लात पड़ने वाली है, कहाँ से थप्पड़ पड़ने वाला हमको मालूम नहीं है. कभी कभी भगवान ऐसे सर पे हाथ भी फिराएंगे. लाइक व्हेन यू आर गिविंग अ क्लास, when you're giving a class, certainly you may end up saying something which you never planned for. So the opposite of disappointed happens. You are elated. Arey, Parampara is acting through me. You know, Paramatma is acting through me. मैंने तो ये प्रिपेयर भी नहीं किया था, ये पॉइंट आ गया, देखो परंपरा का मर्सी मेरे थ्रू फ्लो हो रहा है. You will start becoming proud. Instead of disappointed, you'll become proud. So हमें ना इस तरफ जाना है where we become disappointed, ना इस तरफ जाना है where we become very elated. सुखे दुखे समय कृत्वा. Just be very, you know, वो ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न. And that's what this verse is. This translation which we are reading, न प्राप्य न किंचित वांछति. Person engaged in pure devotional service neither desires anything for sense gratification, nor laments for any loss, nor hates anything, nor enjoys anything on personal account, nor becomes very enthusiastic in material activity. So this is our situation. हम बस भक्ति, प्योर भक्ति करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, उसमें जो भी हमसे बन पड़े हम करें. Like that. Does that answer question? Anyone like to add to that? Any other thoughts? Yes, Lekha Mataji. जी आई हैड अ क्वेश्चन एक्चुअली. आई डोंट वांट टू Yeah. ऐड एनी. तो Yes, जी ma'am. मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं डिसअपॉइंटमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे इसलिए होता है क्योंकि मेरे को लगता है कि कृष्णा का अरेंजमेंट देखो उस डिवोटी के लिए कितना अच्छा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस और भक्ति, और इन टर्म्स ऑफ एसोसिएशन, और इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग. एंड फिर मैं अपने आप को कंपेयर करती हूँ, नहीं कृष्णा ने मुझे वो अरेंजमेंट क्यों नहीं दिया. तो देन आई गेट डिसअपॉइंटेड कि यू नो कृष्णा डजंट लाइक्स मी, और आई मीन व्हाटएवर. मे बी मैंने ज्यादा वैष्णवों की सेवा नहीं की इसलिए मुझे वो कृपा नहीं मिला, समथिंग लाइक दैट. So how to deal with that? Even though I know this philosophy कि कृष्णा का प्लान परफेक्ट होता है, but फिर भी जाते ये थॉट्स ऐसे है. Yeah, so we were discussing na that someone else performed better than me, someone got mercy more than me. ये जो comparison होता है ना, उससे भी बहुत disappointment होता है.
We have to understand everyone's situation is unique. You know, बाहर से सब कुछ बहुत एकदम सोना सोना जैसा लगता है, एकदम everything looks like gold from outside. बट जब हम लोग अंदर डालते बोलते हैं ना, ओपनिंग कैन ऑफ वर्म्स, तो कैन बाहर से कितना सुंदर लगता है, इतना अच्छा पैकेजिंग, चमकीला, बहुत अच्छे अच्छे कलर्स में, वो कैन खोला तो क्या निकला बाहर? वर्म्स, कैन ऑफ वर्म्स. So everyone's life looks very nice on the outside. Only when we actually start associating, we start spending time with devotees, then we come to know कि उनके लाइफ में कितने challenges हैं. अरे बाबा, उससे अच्छा तो मेरा लाइफ अच्छा है. You know, like there is this anecdote someone had told, that once there was well, it's an imaginary thing, but it's a very powerful thing for you to get. There was a magical interaction that was set up, okay, where I said everyone can come with their pitara of problems, okay, and you can sit in front of somebody else, they will tell you their problems, you can tell them your problems, and you have the right to exchange. आप लोग एक दूसरे को exchange कर सकते हो, and you can exchange any number of times. So everyone, भीड़ लग जाता है, सब लोग आते जमा होते वहां के, बैठ जाते हैं और बोलते कि चलो let's sit. So person sits in front of another person, and first that person starts telling his problems. When he hears this person's problems, he says, Hare Krishna, I am better with my own life. He goes to another table, think maybe वो टेबल में कुछ अच्छा लाइफ रहेगा, वहां जाता हूँ. वो टेबल में जाता देखता तो उसका और भी ज्यादा खराब है, मेरे से और, मतलब वो पहले वाले से और भी खराब है. So really everyone's life is filled with suffering actually. No one has a perfect life. We may see, बाहर से हमको लगता है कि ये देखो कितने अच्छे से ये लोग सेवा कर रहे हैं. This Mataji is so good in preaching. This Mataji is so good in making garlands. This Prabhuji is so good in giving lecture. This Prabhuji is so good in dealing with people. I am not like this. Why my husband is not like this? Why my wife is not? You may feel disappointed with 100 things. When you start comparing, you'll always be unhappy. So comparison is often root cause of problems in life. When you start comparing, boss starts comparing you with some other colleague, would you like it? You wouldn't like it. If husband starts comparing wife with some other Mataji, would she like it? She wouldn't like it. If you compare your husband with some other Prabhuji, will he like it? He won't like it. So why compare yourself also with others? Don't. Comparison is generally not. We can benchmark, we can be inspired. बोलते हैं ना कि अनुकरण मत करो, अनुसरण करो. Be inspired by some other devotee, how wonderfully they're doing. You are saying, I'm not good enough. Okay, make an effort to train yourself. But वो training करने से भी नहीं हो रहा है, accept कर लो. All right. I'm still getting seva. I'm just grateful. Despite all my limitations, अभी भी मेरे को किसी ने बोला नहीं कि आप जपा मत करो माता जी, आपसे नहीं हो पाएगा. किसी ने मेरे को बोला नहीं कि प्रभु जी आप प्रोग्राम में मत आओ, आपका मनहूस चेहरा लेके प्रोग्राम में मत आओ. अभी तक तो किसी ने बोला नहीं है. Be grateful for whatever small things. बोलते हैं, be grateful for small mercies in our life. Like that. Does that answer, Mataji? Hare Krishna. Anybody else? Anyone else would like to share something? Hari Balram Prabhu, Murari Vishnu Prabhu, Radha Keshav Prabhu, all have been very quiet. Raghavanand Prabhu. Anyone? Damodar Chen Prabhu, you want to say something? अनिरुद्ध तो डेफिनेटली वांट्स टू से समथिंग. वो तो मतलब बोल रहे यार मेरे को क्यों कोई चांस नहीं दे रहे. सबको चांस मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है. यस. Prahlad Chan Prabhu, would like to add something? You said something on chat. I didn't see that. 1 second. Hold on. Chat कहाँ गया? The chat are you? I have realized, I have 2 questions. I have realized that I subconsciously associate my devotional service with Krishna's protection. When disappointment occur, they don't just affect my expectations, they disturb my sense of emotional security. Why does that connection feel so destabilizing? So it is because we are again, इसमें भी expectation ही है कि अगर मैं भक्ति कर रहा हूं तो अवश्य रक्षिबे कृष्णा. चैतन्य महाप्रभु ने बोला है. अभी उसके अलावा मतलब आई एम ओनली फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस ऑफ लॉर्ड चैतन्य, अवश्य रक्षिबे कृष्णा. अभी अगर लात पड़ रहा है तो देन वेयर इज रक्षिबे कृष्णा, राइट? इफ सम डिसअपॉइंटमेंट अकर,
It doesn't just affect my expectation, it affects my sense of security. But I am thinking I am surrendering to Krishna, so Krishna should take care of me. But that is also expectation. Krishna has not promised anywhere. अर्जुन को भी क्या बोला, तीसरे चौथे इंस्ट्रक्शन में बोला, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय, that this happiness and distress are like coming and going of summer and winter seasons. Just learn to tolerate. Be sober. Just learn to tolerate. So even if Krishna's protection the way I expected it has not come, I should not be disappointed by that. I should understand Krishna is giving me protection in different way. He's protecting me from developing false ego. He's protecting me from expecting things from him. So we don't know how that protection will manifest. We just have faith that Krishna will do what is right for our bhakti. So even if we are thinking like that Krishna's protection is there, that is good. So that gives us a sense of security. But how that protection will manifest, we cannot dictate that. That is the okay. How do I differentiate between faith in Krishna's protection and an unconscious need for control or certainty? How do I differentiate between faith in Krishna's protection and an unconscious need for control? Yes, samjha nahi, Prabhuji. If you can just explain what you meant. Yes, Prabhuji. Hare Krishna. So, Prabhuji, over here, I am trying to say sometimes we want to have a control over a specific outcome or have a certain outcome. We get attached to a certain outcome. I'll not say attached, but ye ho jayega, kind of, when you are pretty confident. And at the same time, we get an answer that Krishna is protecting us by not giving a specific outcome. Just like we may say that it is mercy of Krishna. So if is it really mercy, or is it like I am getting attached to a particular outcome, or I want a control on a specific outcome? So ये दोनों में see, confusion that is होता the है. nature of the human mind, that always, the mind will always make us feel that, I should have a certain outcome in a certain way, as per a certain timeline, एक हमारा expectation, ये nature, human nature है. Because as long as we are living in a material world where everyone is putting pressure on you, ऐसे ही होना चाहिए, life should be like this, you should be like this, you should be studying like this, you should get job like this, you should earn like this, you should have house like this, you should get married at this age, you should have children by this age, you should have one child, you should have two children. मतलब society will never stop thopifying their expectations on you. आपको वो चाहिए नहीं, but वो आपके ऊपर थोपते रहेगा society. So naturally, while we are living in that society, it is very natural that we may also have certain expectations from ourselves, and we strive towards achieving those expectations. That's okay. But if we are keeping Krishna in the center, when we are forming those expectations, and when we are working on those expectations, and when the result comes or doesn't come, in whichever way it comes, if Krishna is the center of it all, we are still safe. It is whether you feel like a controller because the expectation was achieved, or you feel like a loser because the expectation was not achieved. Both are materialistic. We have to understand that karmanyeva adhikaraste ma paleshu padacha. We have a right to perform our duty. Whatever that duty, we're doing it for Krishna, it's already perfect. We may not be in that consciousness yet, but the more we read, the more we hear, the more we associate with devotees who are living life like that, slowly but surely we will be transformed. So whether we feel in control of our lives, nobody feels in control. Actually, honestly, control is an illusion. It's an illusion of Maya. है ना कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति म करता हम means what? Controller. I am the controller. मैं किया, मैंने ये जपा 1 महीने के लिए ये टेक्निक से किया, और इमीडिएटली मेरा भक्ति नेक्स्ट लेवल को चला गया. If I think like that, I am controller. I am thinking that I have achieved this by doing this sadhana for 1 month. We should avoid, as far as possible, avoid that consciousnness, or even stop thinking that we are not controller. हमारा कोई चीज कंट्रोल में नहीं, कोई एक चीज भी, एक पत्ता भी हमारे कंट्रोल में. It's all happening as per Lord's will. So accepting that if I have surrendered to Krishna, then Krishna's will is more powerful than my will. Accepting that is the best and safest position to be in. This is the Lord's will. Whatever is happening by Lord's will. I will just accept it.
Does that answer, Prabhuji? I'm not sure. Yes, yes, Prabhuji. Yeah, yeah. Thank you. Thank you so Okay. much. Okay, Hare Krishna. Anybody else like to share, or shall we conclude here? Murari Vishnu Prabhu, you want to say something? Damodar Sharan Prabhu, Mohanchan Prabhu, Keshav Hari Prabhu, हरे सब चुप कृष्णा है। प्रभु जी, हाँ बोलो प्रभु जी, बोलो। क्या है भक्ति में है ना, जो आए है ना, हमेशा हताश नहीं होना चाहिए, ऑलवेज कंटिन्यूअस भक्ति करना चाहिए, खाली मानव पद नहीं देखना चाहिए। हाँ, और केशव हरि प्रभु का लाइफ ही ऐसा है, उनके लाइफ में भी अनेक तो अनेक के भी अनेक ही में से हम लोग बड़ा बड़ा डायलॉग दे मार सकते हैं, लेक्चर दे सकते हैं, बट ही इज लिविंग दैट लाइफ एट वेदर हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, ही जस्ट कीप्स सर्विंग, just keeps serving, just keeps doing his service. So we have to also aspire to become like that. हमको भी ऐसा बनना है अल्टीमेटली कि मुझे अपना सेवा बेस्ट अपने हिसाब से करना है, and then if Krishna gives me success, good. Doesn't give me, still good. No problem. Like that. Okay, anyone else? Anyone else would like to share, or shall we conclude here? हरि बोल। श्री जी गोपी माता जी, आपको कुछ बोलना है? Hare Krishna. Thank you everyone for joining. I'm sorry that today we couldn't meet in person, and थोड़ा ये अपने को थोड़ा प्रेशर है कि निकलना है अभी, so that's why I said we'll have it online. I have recorded this also, so those who missed it, if they want to hear, you can just tell them that, you know, whatever they want to hear, they can hear. Thank you so much for your time. Thank you for your wonderful service. And thank you for staying with us, even though you may be very disappointed with us also. But still, you all are there. You all are giving us an opportunity to serve you. Thank you very much. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Ki Srila jai. Prabhupada ki jai. Nitai Thank you, Gaur Prabhu. Thank you very much, Prabhu. Hare Thank you, Krishna. Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Thank you for joining online. Hare Krishna. We'll meet Hare again in Krishna. next month. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Wonderful Krishna. lecture. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. हरी बोल, हरी बोल. I'll conclude now because I have to rush now. मुझको निकलना पड़ेगा ड्रेस करके. प्रेस की इज रेडी, रेडी है, लेकिन मैं रेडी नहीं हूँ. मेरे को भी रेडी होना है. Thank चल हरी you, बोल. Prabhu. Thank you. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. हरी हाँ. हरी बोल.